Yes. Vande Mataram, students. Today we are going to start our new topic, functional group. So we already learnt about the classification of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons. So how to classify the organic compound. Clear? So now today's topic is functional group. In continuation of the chapter, which chapter is running now? Some basic principles and technique of organic compound. तो our topic आज हम क्या study करेंगे? तो now we will start the functional group. So let's see what is functional group. How to define functional group? A atom, an atom, or group of atoms. An atom or group of atoms. What is functional group? An atom or group of atoms which represent characteristic properties. Clear? What is the functional group? When, let's see, जैसे आपने एग्जांपल लिया CH3, CH2, CH3, हाइड्रोजन इज रिप्लेस, हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, एंड वी एड एनी फंक्शनल ग्रुप, सपोज OH. So this is CH3, CH2, OH. So now it is the functional group. So CH3, CH2, OH. तो OH is functional group. It is called the alcohol. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? Alcohol. तो OH group represent a characteristic properties. So clear what is the functional group? An atom or group of atom when attached with any carbon chain, it represent the characteristic properties is called the functional group. ये आप किसी भी कार्बन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी. तो different properties represented by different functional group. There are some functional group we will discuss here. Now what are the functional group? Let's see. There is functional group. So priority of the functional groups are, so what is the functional group here? You can see these are functional group and priority order is this: COH, SO3H, COOR, COCl, CONH2, C triple bond N, CHO, CO, OH, NH2 and C double bond C. Next is C triple bond C. So what is the name of the functional group? Write down this is the structure and name. What is the name of functional group? You can write name of the functional group. COH, it means it is called the carboxylic acid. Clear? And SO3H, its name is sulfonic acid. Okay. COOR, this is called ester. नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. तो यू हैव टू लर्न, आपको ये फंक्शनल ग्रुप नाम याद करने पड़ेंगे. COOR, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डैश. डैश का मतलब क्या होता है? ये किसी कार्बन चेन से अटैच होगा. दिस डैश इज इंडिकेट द जॉइंट विद एनी कार्बन चेन रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉन्ड. यू कैन राइट लाइक दिस. R means alkyl group. CH3, C2H5. What is alkyl? From alkane, when hydrogen is replaced, this is called alkyl. Suppose methane, so hydrogen is replaced, it is called methyl. So these are called methyl. So this is called alkyl group. Clear? Next is COCl. You can write C double bond O Cl.
this is called the derivative of the acid. These are derivative of the carboxylic acid. This is called oil halide. Oil halide. What is the name of this functional group is oil halide. Acyl chloride. It's also called acyl chloride. CO group is called the acyl, and this is called acyl chloride. Acyl chloride. Clear? What is the name of the functional group? Acyl chloride. Oil halide is used for its IUPAC name. Used as a suffix. CONH2. Which group is this? This is amide. This is called amide. Now, this group is called cyanide. Cyano. So this is called cyanide. Clear? Nitrile is also called cyanide. Cyanide and nitrile. This is also called nitrile. CHO. This is called aldehyde. Aldehyde. All are functional group and priority order. अगर आपके nomenclature में दो functional group है, if two functional group, तो we have to choose according to priority. CHO, C double bond O, this is called ketone. C double bond O, this is called ketone. OH, this is called alcohol. This is called alcohol. Next functional group is amine. And this is alkene. In functional group, alkene. And this is called alkyne. Alkyne means triple bond. Alkene means double bond. So these are the functional group in priority order. So you have to learn this functional group. So these functional groups, carboxylic acid, again I repeat, carboxylic acid, sulfonic acid. अब आपको लर्न कैसे करना है, H को रिप्लेस करके R लगा दो. दिस इज कॉल्ड एस्टर. नाउ OR को रिप्लेस करके Cl लगा दे, तो दिस इज कॉल्ड एसिल हैलाइड, एसिल क्लोराइड. नाउ Cl को रिप्लेस करके NH2 लगा दो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CONH2, दिस इज कॉल्ड एमाइड. नाइट्राइल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को रिमूव कर दें. द विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, नाउ अटैच कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन, CHO, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड. व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम, बिटवीन द चेन, दिस इज कीटोन. ठीक है. Alcohol, OH group, this is alcohol. NH2, amine, C double bond C, alkene, and C triple bond C, alkyne. It's clear? So what is the functional group and what is the priority order of the functional group? Let's see in detail. So which prefix we have to use, which suffix we have to use, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो ये नाउ व्हाट आर द प्रीफिक्स? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो वी हैव टू राइट हियर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स जिन्हें हम आगे लगाते हैं. तो व्हाट इज द प्रीफिक्स हियर एंड what is the suffix? And here we write any example. Okay, so first COOH, what is the prefix? Prefix हमें कब यूज में लेना है? when two functional group is present here. So COH, suppose there is two COH group, तो one is used as a prefix. तो
suppose its name is prefix carboxy. कार्बोक्सी का मतलब कार्बन इज काउंट हियर. कार्बोक्सी, कार्बन को हम बोल रहे हैं कार्बोक्सी. अब व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स हमेशा नेम में लास्ट में लगाते हैं. तो व्हाट इज द सफिक्स? ओइक एसिड. ओइक एसिड. क्लियर? तो व्हाट इज द सफिक्स? तो फर्स्ट एग्जांपल COH, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड. You can write any example. Let's see. CH3, CH2, CH2, COOH. Keeping in mind, carbon always form 4 bond. Carbon हमेशा कितने bond बनाता है? 4. So there is 4 bond in each carbon atom. So what is the name? Numbering start from 1, 2, 3, 4. So what is the name? 1, 2, 3, 4. What is the name of this compound? Butanoic acid. Butanoic acid. Butanoic acid. We will discuss in detail how to write the name. So we will discuss first what is the functional group, what is the priority, what is the prefix, and what is the suffix. Now it's clear. Next example, next functional group. So next functional group is, what is the next functional group? Sulfonic acid. Sulfonic. So sulfo is the prefix. Prefix is sulfo. And suffix is sulfonic acid. Sulfonic acid. ठीक है. अगर आप ये याद कर लेंगे तो हमें नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा. आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम इजीली कर पाएंगे. तो सल्फो एंड सल्फोनिक. नेक्स्ट इज एस्टर. व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर द एस्टर? एल्कोक्सी कार्बोनिल. एल्कोक्सी, दिस इज OR ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी. Alkoxy. This is called alkoxy and CO is called carbonyl. Alkoxy carbonyl. Alkoxy carbonyl. And what is the suffix? Alkanoate. What is the suffix of this? Alkoxy carbonyl and oate. OATE. This is suffix oate. Butanoate, propanoate, like this. So first carboxy prefix, suffix oic for carboxy, suffix oic. SO3H, suffix sulfonic, prefix sulfo. COOR, alkoxy carbonyl. Oate, suffix, prefix, alcohol, carbonyl. Now next is COCl. What is the name? Chlorocarbonyl. Very easy. Alkoxy, this is alkoxy group. So alkoxy carbonyl. This is chloro group, chlorocarbonyl. And suffix is oil halide. Oil halide and chloride. You can write chloride also. Okay. Example we will discuss in further class after the IPC nomenclature. IPC nomenclature जब आप सीख लेंगे तो हम 1 by 1 एग्जाम्पल इनके स्टार्ट करेंगे. तो क्लोरोकार्बोनिल, दिस इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स आगे लगेगा. क्लियर? एंड ऑयल क्लोराइड इज इट्स सफिक्स. नेक्स्ट CONH2. What is the name of CONH2? Hamide. Carbamoyl. Carbamoyl. Its name is Carbamoyl. And what is the suffix? Amide. Benzamide, ethanamide, propanamide. Carbon always count in carbon chain. Carbon हमेशा count होगा carbon chain में. Now next is C triple bond N. What is the suffix?
prefix cyno, this is called a cyanide group. Cyno इसलिए इसे हम कहते हैं cyno. And suffix is nitrile. What is the suffix? Nitrile. Nitrile is suffix. Clear? CHO. CHO का क्या होगा बेटा प्रीफिक्स? फॉर्मिल. फॉर्मिल और ऑक्सो. ऑक्सो भी हो सकता है, फॉर्मिल भी हो सकता है. तो CHO फॉर्मिल, दिस इज साइनो. ओके, इट्स इजी. फॉर्मिल और ऑक्सो. एंड सफिक्स इज एल. AL. butanal, pentanal, ale is suffix. CO, its suffix is also oxo. इसका सफिक्स भी ऑक्सो होगा, बट CHO हमेशा टर्मिनल पर होता है. एंड CO कीटोन जो ग्रुप है हमेशा चेन के बीच में होगा. 2 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन बिटवीन द चेन. एंड इट प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट पर होगा. CHO क्या होगा बेटा प्रीफिक्स इसका? ऑक्सो. ठीक है. एंड सफिक्स इज ऑन. ONE, नॉट वन. वन रीड नहीं करना आपको, क्या लिखना है? ONE. नाउ OH क्या नाम था इस फंक्शनल ग्रुप का? एल्कोहल. एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर एल्कोहल? हाइड्रोक्सी. OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो इट्स प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी. नाउ सफिक्स इज ऑल. What is the suffix? All. Pentanol, butanol, you have to write position also. Next, NH2. What is the NH2? Amino. Amino used as a functional group. Amino. AMINO. And amine. Prefix is amino and suffix is amine. AMINE. So what is NH2? CONH2, amide, and only NH2, not oxygen here, attached with only carbon chain. This is called amino and amine. Now it's clear. Next, C double bond C and C triple bond C, there is no prefix. C double bond C suffix is in, and C triple bond suffix is ine. YNE. Now let's see again. These are the functional group. First, carboxylic acid, sulfonic, ester, acyl halide, amide, nitrile, cyanide also, aldehyde, ketone, alcohol, amine, alkene, alkyne. Clear? Have you written? Now, prefix carboxy-oic acid, sulfo, sulfonic acid, alkoxycarbonyl, OH, chlorocarbonyl, oil chloride, carbamoyl, amide, cyano, nitrile, formyl or oxo, you can write ale, C double bond O oxo, all, hydroxy, all, amino, amine, and C double bond C suffix in, and C triple bond C suffix is I. It's clear? So what is the functional group? So you have to learn all functional group. Now we can start next topic. So we will start the now next topic, homologous series. Let's see the homologous series. What is the homologous series? Yes, write down. Next topic, homologous. homologous, homo means same, समान. जैसे हम किसी दूसरे के सिमिलर हो तो हम होमोलोग्स कहलाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? ओके,
In homologous series, always functional group will be same in all homologs. Suppose there is different member, like we can take an example of alkene, CnH2n plus 1. हमने एक एल्केन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है. इस एग्जाम्पल से हम होमोलोगस सीरीज करेंगे. ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. तो किसकी सीरीज होती है? सिमिलर कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, एंड दीज डिफरेंट मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग्स. इन डिफरेंट मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलॉग्स. सपोज एन एग्जांपल ऑफ एल्केन. एल्केन हमने एग्जांपल ले लिया. तो फर्स्ट व्हेन वी राइट n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एल्केन, दिस इज सैचुरेटेड CH4. Okay, now again CH3, CH3, next CH3, CH2, CH3. One carbon is called meth, this is called methane. Cane is the functional group. Alkane, ethane. 2 carbon is called ethane. Propane and CH3, CH2, CH2, CH3. This is called butane. 4 carbon is called but. Next CH3, CH2. You can write like this: 1 2 and 3 CH3. तो हाउ मेनी कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 3 4 5. इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पेंटेन. इट्स क्लियर? तो लाइक हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, यू कैन राइट लाइक दिस. तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? ए सीरीज जिसमें सभी कंस्टिट्यूएंट जो होंगे वो एक ही फंक्शनल ग्रुप के होंगे. तो ऑल कंस्टिट्यूटेड, जैसे दीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स, दीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स. इन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलॉग्स. होमोलॉग्स. तो होमोलॉग्स आर डिफरेंट मेंबर ऑफ द सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज इज फॉर्म्ड बाय सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच कंस्टिट्यूटेड एटम, जो एटम होंगे वो कैसे होंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे. Constituted compounds are same functional group. Now, when we write like CH4 replaced the hydrogen and add OH group. So what is the formula? CH3OH. Okay. Next, you can write CH3, CH2OH. Methyl alcohol, ethyl alcohol, CH3, CH2, CH2OH. Now CH3, CH2, 1 2, there is 3 and OH, butanol. So what is the general formula of alcohol functional group? You can write for the general formula like this: 1 हाइड्रोजन इज लेस हियर देन एल्केन. एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ अटैच कर सकते हैं. ये जो सीरीज बनेगी वो किसकी बनेगी बेटा? एल्कोहल की सीरीज बनेगी. ओके. और ये सीरीज हमने कौन सी पढ़ी थी? एल्केन की. तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. आप किसी भी एग्जाम्पल से होमोलोगस सीरीज को समझा सकते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होना चाहिए. जैसे OH OH है, अब इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बिकॉज सब में कौन सा ग्रुप है? OH, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज. होमो मीन्स सेम, सिमिलर एंड ऑल प्रेजेंट सेम फंक्शनल ग्रुप. So each homologs present same functional group. You can take example alkane series, alkyne, any series we can take here. So now, what are the characters of homologous series? It's clear. Now, next point is characters of the homologous series. So which points you have to learn? कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं?
First point is each homologous series represented by जनरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। तो ईच होमोलोगस सीरीज, जैसे अभी आपने एल्केन का एग्जांपल लिया तो हमने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, CnH2n+1। तो ईच एटम हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। तो यू कैन राइट CnH2n+1 OH, दिस इज अल्कोहल सीरीज। ओके, क्लियर। 1 C 2 into 1 plus 1 CH3OH. So this is alcohol series and this is alkene series. First point is clear. Now second point. तो each homologous series represented by general formula. सभी का एक जनरल फॉर्मूला होगा, किसी को भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। नेक्स्ट, two homologs, अब टू होमोलॉग्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी आप टू ले लें। टू होमोलॉग्स have difference in 1 CH2 unit or 14 mass unit, atomic mass unit. U means unified atomic mass unit. Let's see, जैसे CH4 मीथेन, अब इसमें आप CH2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा, C2H6। अगर हम इसमें CH2 ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड मेंबर मिल जाएगा। C2H2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं CH3CH3। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, तो दो मेंबर में कितने का अंतर है, 1 CH2 यूनिट का। आप 14 मास भी लिख सकते हो, क्यों, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1.008 अप्रोक्सीमेट होता है, 2 हाइड्रोजन, तो 12 + 2 = 14 मास यूनिट। तो दो होमोलॉग्स हमेशा CH2 यूनिट से डिफरेंशिएट होंगे और 14 मास यूनिट से। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, अभी आपको बताया था, फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होगी, एल्केन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ओइक एसिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर जनरली similar of each member. So chemical properties are similar of each member of the series. So clear. Now fourth point, what is the fourth point now? Physical properties. कौन कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, ओके, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीज इन मास इंक्रीज। तो इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीज
generally increase. Because why it increase? Because molecular mass, molar mass is increased, van der Waals force of attraction increase, so these properties are generally increased. And each member, any member can be prepared by same method. So methane, ethane, butane may be prepared by similar method. So it's clear what are the homologous series. First point, each homologous series represented by general formula CnH2n plus 1. Two homologues have difference between two member, one CH2 unit and 14U. Chemical properties are similar of each members of the series. Okay? And physical properties are show proper gradation, increase in the molecular mass. तो proper gradation मिलेगा हमें यहाँ. तो melting point, density, solubility, boiling point, all are the physical properties. Now it's clear what is the homologous series. Now it's enough for today class. Have a nice day. Thank you.